Hi guys, good morning. It's another day, day 2 in Ladakh. Today also we are just in Leh and we're just gonna go and explore all the places nearby. Last night I did have a little problem while sleeping. We slept early because we wanted this day to be really, stress free and hectic free. So we slept quite early, but around 4:30 in the morning I started having a very bad headache. So I woke up, I took one medicine for headache and then I slept back. So now I'm feeling much better. And now we're just going to have our breakfast because बहुत late हो गया है. The taxi has come and then we have to leave and we even have to get ready because we're just in a night suit right now. So we're gonna hurry up. Breakfast के लिए कहाँ जाना है? यहीं पे, okay. So we're having our breakfast in open right here. So in breakfast we have here is this is mushroom grill sandwich. This is vegetable sandwich and then this is vegetable cutlet. I just tried this and I don't know यहाँ की breads में क्या है. They are so crispy. And look who's having breakfast with us. नहीं, वो नहीं खा रही है, वो bread नहीं खाती. तो मुझे क्या पता क्या खाती है? She wants more to eat, huh? है वो मेरे पैर के नीचे क्यों जा रही है? अरे कुछ नहीं कर रही है, रिलैक्स. She just doesn't want to get out of here. She's enjoying our table so much. So all ready to leave for some sightseeing around Leh. Kept my makeup very minimal. I'm wearing this top that I got from H&M and this pant from Zara. Very comfortable, and these shoes from Westside. Hey guys, we're all ready and we're now leaving for some sightseeing. This is the entrance of the hotel and I'm not sure where we are going right now. We're just going to see some monasteries. Probably it'll take like 1 hour from here, and he's actually calling the driver because the car is right there but we do not know where the driver is. भैया कहाँ पर हो? हाँ? टैक्सी स्टैंड में नहीं, हम तो बाहर है ना, होटल के बाहर. होटल के बाहर आ जाओ, फिर लद्दाख ग्रीन्स के बाहर. अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है. What happened? कि आपने 11 बजे बोला था. हाँ. तो कह रहे ठीक है, मैं आता हूँ 10-15 मिनट में आता हूँ, पास में ही है. Okay, so we'll have to wait for another 10-15 minutes till the driver comes. है ना 2-3. हाँ, क्या लिखा था? ठीक से ही मिस. हमने सोचा था कि ऐसे आज हम यहाँ पे हैं, कल हम नुब्रा चले जाएंगे यहाँ से. तो फिर हम वापस आएंगे, जब वापस पैंगोंग से वापस ले आएंगे तब भी हमारे पास एक दिन होगा यहाँ पे. तो हमें सोचा था मैग्नेटिक हिल, और मैग्नेटिक हिल के पास क्या है, कौन चीज? संगम, और एक वो कौन सा गुरुद्वारा है? हाँ, चलो गुरुद्वारा तो इतना नहीं है. संगम वैली जहाँ पे वो ज़ांस्कर रिवर है. हाँ जी. और मैग्नेटिक हिल, ये सोचा था लास्ट डे पे. हाँ, जो मोनेस्ट्री है जहाँ हमें आज जाना है वो इसके पास ही है या दूर है इससे? मतलब ये दूसरे लोकेशन पे. मतलब मैग्नेटिक हिल अलग है, वो अलग जाना पड़ेगा. हमें इससे जाना पड़ेगा. और कौन कौन सी मोनेस्ट्रीज है जो अच्छी है, मतलब जाना चाहिए जरूर? वो तो शेटिक से ही मिस तो है. इसने तो आज आप ये शांति स्तूपा कर रहे हैं क्या? हमने सोचा था बट हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं तो फिर वही चल रहा है, शेटिक से मिस वही चलते हैं. वो सब पास में है, यहाँ से कम से कम 45 किलोमीटर. नहीं, ये 3 अलग अलग है ना, शेट एक हिमिस. ये 3 अलग मोनेस्ट्रीज हैं, अलग और तीनों पास में है. हाँ, थोड़ा हिमिस थोड़ा दूर है. अच्छा, तो मैं तो कह रहा हूँ 2 ही कर लेते हैं. हम 2 को ही कर लेते हैं. यहाँ पे शांति स्तूपा चलेंगे. इन तीनों में से सबसे अच्छी 2 कौन सी हैं? अब फिर ठीक से और ये शेयर कर लो. फिक्सी और शेयर कर लेते हैं. हिमिस के बदले में फिर ये कर सकता हूँ मैं, शांति स्तूपा आ जाएंगे ना, ये करके. चलो हम वो दोनों चलते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं फिर कितना टाइम बचता है. अगर टाइम बचेगा तो आगे चले जाएंगे, वरना वापस आ जाएंगे. ठीक है. चलो बैठो. आए नहीं जिनके
वाले वक्त जाम हुआ है एक फूलों की मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया तुम ताना तुम ताना भैया. So we've come to Shea Palace. Look at the view. Oh. Wow. So we just came back from the Shea Palace and it was okay. Like if you're very fond of monasteries, then you can go and have a look at it. But we are personally not very fond of that. So now we've come to Rancho School. वो देखो वो मूवी में था. मुझे उससे फोटो खिंचानी है. गिरा देते हैं. वहां से गिराता है ना नीचे. क्या नाम था उसका, मैं भूल गई नाम उसका. साइलेंसर. हाँ. So after the Rancho school, we've come here to the Hemis monastery. Okay, so there's one thing that you have to keep in mind whenever you're going to any monastery or any temple, that the road is very steep, so you have to, you know, walk on that, and you may start feeling breathless. So that does happen in the first 2 days. So we are keeping it very slow, like we're walking very slow, and we keep taking breaks in between. Drinking water. Yeah, and we keep ourselves hydrated because that's just the way you have to be here. So here we are at Shanti Stupa, and just look at this beauty. Wow. Whew. So now we've come for lunch. It's around 3 o'clock and we've visited all the places that we wanted to, and now the rest of the day is at leisure. But right now I really want to show you the cafe that I'm at right now. So this is the Wanderer Cafe, and this is right just at the Leh Market. Just look how beautiful this is. This is a rooftop cafe. Just one, you know, pro tip that I'd like to give you, that and also look at the, you know, the indoor area. This is also very cozy. So just one tip that I'd like to give you, that if you are, whatever hotel you are staying in, do not take lunch or dinner in that hotel, because you'll find some amazing restaurants and cafes, and you'll find them at the Leh Market. So you can, you know, just roam around and look for whichever cafe or restaurant you want to sit in. We were given dinner in our package, but we said that we do not want dinner because we wanted to, you know, explore the areas around and the restaurants and the cafes around our hotel. My lips are freezing, my hands are freezing. I'm feeling a little breathless.